मेयो याक। चैन से सोना है तो जाग जाओ, काली बिल्ली दिखे तो भाग जाओ। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मास्टर चाओ। Some people like mayo in their momos and others like us have good taste. Welcome to episode 2 of Masters of Chow, where we're going to 4 momo spots to see who's the ultimate champion. Let's go. We are at Delhi Haat today, but यहाँ पे बेस्ट मोमोज कहाँ मिलते हैं वो किसको पता होगा? Of course, उनको पता होगा जो यहाँ रोज आते हैं। Let's ask them. भैया ये दिल्ली हाट में बेस्ट मोमो कहाँ मिलते हैं? आसाम में। आसाम। सिक्किम। सबसे अच्छा मोमो सिक्किम। सिक्किम बहुत बढ़िया। सिक्किम सिक्किम पे डन। लेट्स डू इट ब्रो, लेट्स गो टू सिक्किम। तो आपने यहाँ पे कब से काम करना स्टार्ट किया? मेरे को कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकता क्या है, सबसे अच्छा क्या है, सबको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मोमोज ही है पसंद, चिकन मोमोज। और चिकन मोमोज में स्टीम फ्राइड कौन से? स्टीम ज़्यादा बिकता। स्टीम। तो दिन के कितने जाते होंगे चिकन स्टीम मोमो? 50-60 प्लेट। 50-60 प्लेट। और आपको भी सबसे ज़्यादा चिकन स्टीम मोमो ही पसंद है? हाँ जी। आपको भी पसंद है। तो आप उसके साथ चटनी खाते हो कि मेयो खाते हो? चटनी खाते हैं, स्पाइसी चटनी। स्पाइसी चटनी। डन ब्रो, लेट्स डू इट। This is what I call a balanced diet, guys. Processing, guys. This is unlike anything I've ever had. Overly spicy. मतलब बहुत ज़्यादा spicy. I think I need some water. The coating is very good. It's not thick. When I was picking it up, I thought it would be thick, but it's perfectly cooked. So that's great. And the stuffing is one of the best in Delhi, like hands down. So this, the non-veg one, veg तो बहुत negative लग रहा है, but the non-veg one is a solid 9 on 10 from me. Guys, I'm scared for the veg momos because ये मुझे गोभी के पराठे लगते हैं, but here goes nothing. It's as good as a veg momo can be. The stuffing is a bit undercooked, so it's crunchy, and I've never had that. This is a pass from me. The soup is not souping, so we have to add our chili oil right now. Now this tastes like some asli Chinese, bro. Oh wait, momos are not Chinese, but this is banging. Too good. नजर मत लगा देना guys, मेरा पेट खराब नहीं होना चाहिए. This place is Delhi Stock Exchange for momos. Options unlimited और confusion उससे भी ज़्यादा. Don't know who's Yashwant, but we're at his place, so he better take good care of us. And also this place is channeling its inner Mumbai, because यहाँ पे गड्ढे और कचरा हर जगह है. It's literally called a momo market because there are so many types of momos available. Let's see which one will we like. Pinky, Pinky, Ponky, father had a donkey. Donkey died, father cried, Pinky, Pinky, Ponky. We're going to Chimney Sizzlers, bro. आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? आपका 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और आपका फेवरेट थिंग क्या है यहाँ पे खाने के लिए? चिकन मोमोज ट्राई कर सकते हैं, चिली चिकन है, सिजलर्स हैं। और सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग क्या है उसमें से? मोमोज हैं। मोमो कौन से वाले मोमोज? चिकन मोमो, मटन मोमो, या चॉइस आपको जो भी। चिकन मोमोज, मटन मोमोज। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे अपने स्टॉल को अच्छा प्रूव कराते हो? क्वालिटी अच्छी दोगे, सर्विस अच्छी दोगे, बेस्ट पार्ट वही है बिजनेस का। आपको बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा। Quality and service, guys. Let's put that to test. Come. We have ordered the veg chili and the chicken steam momo, and I can't believe this. I'm more excited for the chili one. Because it's veg? No, because it's chili. Yes. It's huge. That's what she said. I don't know how to eat it, but Jai Mata Di. The stuffing is 1,000 times better than the INA one.
It's perfectly cooked. It's generously filled. And I don't mind this veg momo actually. And the outside is also very chili chicken like. So if you're a vegetarian, this is your closest bet. Diljit Paji, nazar mat lagana, but the chicken is so juicy. It literally melted in my mouth. It's very different than whatever I've had. I hope ये कुत्ते का meat ना हो. But it's giving, bro. It's giving like nice, juicy, thin layer. I think I would also give this a 9. But the chutney is too spicy for me. थोड़ी ज़्यादा overly spicy है. So I'm gonna take out my secret weapon. That's adequately spiced according to me. It's the Master Chow Momo chutney. Let's get into it. I have high expectations. That's a 10 on 10. Too good. Please get this whenever you're coming here. I have read that अगर मैं यशवंत पैलेस आया हूँ तो मेरे को fruit beer ज़रूर पीनी चाहिए. So I'm gonna do that. I hate beer, by the way. Please don't judge me. I don't like beer, but I hope I like this. This is like an apple juice and an iced tea gave birth to a beer situation. And I'm here for it, bro. Like, packaging is not my vibe. It's giving Theka vibes. But the taste, too good. I am at a momo place. We have come to eat momos. And guess मेरे को return में क्या मिल रहा है? Stuff. If you know, you know. But I'm not complaining. And this time I won't spit it out because it's really good. Thank you, भैया. Normal momos तो बहुत खा लिए. Now we're having tandoori momos. This is Delhi's return gift to the momo creator. उनको हार्ट अटैक आया होगा, बट हमें फर्क नहीं पड़ता. भैया आप कैसे हो? पहली बात, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? 4 years. 4 years. आपका फेवरेट मोमो क्या है यहाँ पे? तंदूरी. आपको स्पाइसी चीज़ें पसंद है? बिल्कुल. भैया लाइक्स इट स्पाइसी गाइस. क्या लगता है आपको, ऐसा क्या था यहाँ पे जो इसने फेमस बनाया इस जगह को? ये तो हमारा मेन तो ये तंदूरी मोमो थी. तंदूरी मोमो. आपको लगता है ये दिल्ली के बेस्ट तंदूरी मोमोज है? बिल्कुल सर. पक्का? और अगर यहाँ से बेस्ट तंदूरी मोमोज मिल जाए कहीं तो? हमारा बेस्ट नहीं मिलता. नहीं मिल सकता, तो ये बेस्ट से भी बेस्ट है. जो साइड वाला कैफे है वो कब खुला था? फिलहाल 1 month ही हुआ है. सही है, तो वो सही चल रहा है साइड वाला. चलो सही है, तो फिर हम साइड वाले पे बैठते हैं गाइस, कुछ यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं पैसेंजर प्रिंस हूँ, तो इसके अंदर चलते हैं ताकि मैं पिघल ना जाऊँ. This is a no negativity zone, so of course इसको यहाँ से हटाओ. I'm excited. This literally tastes like tandoori chicken. Momo not so much. जो इसका crispy bits है, वो तंदूरी चिकन का जो black portion होता है उससे टेस्ट कर रहा है. Chicken is obviously tandoori chicken. The gravy is phenomenal, perfectly spiced. The chutneys are a bit missed for me. ये green chutney तो तंदूरी चिकन के साथ खा सकते हैं, but ये red वाली से ज़्यादा मज़ा नहीं आया. I will try it with the Master Chow Momo chutney as well. But on its own, it's a solid tandoori chicken. Momo maybe not. Let's try their momos because I have to be fair to them. If I had to give a momo that would represent all Delhi momos, this would be it. It's not very authentic. It's not very high end. But this is what I've eaten ever since I've grown up. And I think it passes. Chutney though. The founder of Hunger Strike is now trying our Master Chow Momo chutney. The audience is tough. Let's see कैसे लगेगा. पप्पू पास हो गया? पास हो गया, बहुत बढ़िया है, बहुत यम्मी है. यम्मी है. चलो गाइस, वी आर अप्रूव्ड. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये तो मेरे को टक्कर दे दिया हमने. 50 रुपये नहीं काटेंगे ओवर एक्टिंग का. We now at our last stop which has popcorn momos. छोटा पैकेट, बड़ा धमाका.
बट बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, आई डोंट नो, लेट्स सी। भैया एक प्लेट पॉपकॉर्न मोमोज कर दो। Thank you. They're very small, perfect for anyone who says size doesn't matter. I'm gonna stay away from the mayo because we don't want that energy. But they have 3 chili sauces. This I think is sweet chili. This I think is spicy, and this I'm guessing is the most spicy. So I'm just gonna do that. Let's see. This was like a quickie. बहुत जल्दी start हो गया, खत्म हो गया. ज़्यादा fun नहीं आया. This should not exist. मेरे को अपने मोमो पे ये कड़ी पत्ता, धनिया, whatever ये नहीं चाहिए ब्रो. मेरे को मोमो चाहिए. But let's go again. It does the job of what a momo is supposed to do, but it's not as satisfying if you ask me. Coating भी थोड़ी thicky है because छोटू सा है. The momo is a 7 on 10. I've had better. I don't get the hype behind popcorn momos. Chicken popcorn is better, and obviously butter popcorn is the best. But will I have it again? Probably not. One time try के लिए perfect है. भैया एक काला खट्टा दे दो. Thank you. After this day full of spice, I needed something to cool down, and obviously चुस्की से better क्या ही होगा. But I hope you like the 4 spots that we covered, from tandoori to steam to even popcorn. We've got it all. But my winner was probably going to be the INA one. It was the perfect amount of juicy, the coating was thin, and the sauce was amazing. So yeah, till then, like, share, comment, subscribe, you know the drill. Bye!